Dear H1B holders, you all deserve to know the reality of moving from H1B visa to Canada. I recently did a video as well, got a lot of hate as well as appreciation. At the same time, I wanted to clear out many things about reality of life as an H1B holder in the US versus moving to other countries like Canada, and is it worth it? Once again, most of you all applied to go to Canada. 10,000 slots were filled in 2 days. What is the reality of it? So discuss karte hain with number one about opportunities. Every single year, 1.1 million immigrants and more than that come to US who are documented immigrants. But on the other hand, in Canada, so around 500,000 immigrants come to Canada every year. So documented की बात हो रही है. So this makes easy to compare. अगर immigrants आ रहे हैं 2x in US and 1x in Canada, and according to LinkedIn, the tech jobs and the opportunities are almost 10x and more than 10x in US. आप खुद समझ सकते हो what happens to the competition of all those opportunities. So ये एक सच है जो आपको accept करना पड़ेगा that opportunities even proportionally ratio wise भी बहुत कम है in terms of tech especially, because काफ़ी लोग struggle करते हैं 6 months to 8 months is normal to wait for a job, and US में in 2 months it is easier to get a job, so it becomes the reality. Now number two thing that you need to know is who are the people, कौन है ये लोग जो अप्लाई कर रहे हैं towards that 10,000 slots. Number one are the people who are like us, जिनका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर अटेम्प्ट में H1B नहीं मिला, एंड दे थिंक कि यार थर्ड ईयर H1B नहीं मिलता, लेट्स गेट स्टार्टेड विद वर्क परमिट in Canada, जैसे मैंने किया था. So my company helped me with my work permit in Canada so that I can continue over there if I don't get an H1B visa. But luckily things were sorted out, so my backup was cancelled to go to Canada. So ये number one reason, and number two reason are the families quota. So imagine करो, like you are young, जब आप young होते हो, आप H1B पे अगर आप 20-30 साल रहना चाहते हो, यू आर कंफर्टेबल बिकॉज H1B पे अगर रिसेशन भी आता है, इफ रिसेशन कम्स इन द US, you can find a job 1 month, 2 months with the help of consultant or on your own. It is easy. Even though recession might make you nervous, oh, what if I lose my job? I have to go back to my country. But it is possible to get a job at least in 1 to 2 months in the US. So you don't freak out as much. But जब आप 40 से ऊपर हो जाते हो, when you are above the age of 40, things are not the same. You are not as different from someone who is 30 years old with similar experience. अगर imagine करो, अगर आपके पास 5-6 years की expertise है in one particular field, अगर कोई 30 years का है उसके पास भी वही expertise है, the person who is 30 years old in the tech industry will be preferred. जब आप 40 से ऊपर चले जाते हो, your preference to get employed in tech industry is less. So that's why you will be more nervous when recession comes up and you have a fear of losing your job. आप बहुत ज़्यादा डरे होगे when you are 40 or above or 45 or above. So that fear, that stress, आप पूछोगे उसके बाद, is it worth it to have that stress every now and then? अभी recession चल रहा है, is it worth it? अभी बाद में फिर से कोई recession आ जाता है, फिर से वो डर आएगा, is it worth it? कभी कभी companies unstable हो जाती है, is that worth it? And that is the biggest reason, उस fear को solve करने के लिए people think of going to Canada. So ये fear कम होना यूएस में पॉसिबल ही नहीं है बीइंग एन H1B होल्डर, और मैंने भी वो फील किया है, तो आई कैन कनेक्ट विद यू ऑल. एंड 2 महीने में व्हेन यू हैव टू फाइंड अ जॉब, एंड imagine that like who are in the line to get a green card, जिनका नंबर शायद 20 years तक में नहीं आने वाला, can they wait for that long and go through that stress in every single recession, every single instability that comes in tech industry? और ये जब उन्हें लगता है कि इट्स ओवर, बहुत सैली है स्ट्रेस, एंड दैट स्ट्रेस कम्स डाउन टू द फैमिली एज वेल. इफ यू हैव किड्स, योर वाइफ, वो इंस्टेबिलिटी आपके आसपास आपको फैमिली को भी अनस्टेबल कर देती है. लाइक द अनस्टेबिलिटी ऑफ लूजिंग द हाउस, अनस्टेबिलिटी ऑफ लूजिंग द कार, सो सेलिंग ऑल ऑफ दैट करियर एंड गोइंग टू अ डिफरेंट कंट्री. वो डर को सॉल्व करने के लिए यू थिंक ऑफ मूविंग एल्सवेयर. एंड जब आप सोचते हो कि यू वांट टू मूव एल्सवेयर, Canada is the closest and this opportunity opens up and you apply. Now, is that
actually worth it? तो कनाडा जाते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगरी नंबर 1 इज दैट यू आर यंग एंड आप अभी फैमिली वाले नहीं हो. 40+ वाले को भी नहीं बात करते. यू आर यंग, यू गेट ऑलमोस्ट 30 to 40% pay cut according to majority of the people on Reddit on comments that have said, क्योंकि कैनेडा इज एक्सपेंसिव, टैक्सेस आर मोर, एंड जिनकी सैलरी 150K से ऊपर है उनको 40% तक लॉस फील होता है when they go from a salary of 150,000-160,000 or above to Canada. पर जिनकी सैलरी 120,000-130,000 US dollars के अराउंड है, they feel it's like 20% less because the highest salaries like 400K 300K वो कनाडा में बहुत ही कम हमें सुनने को मिलता है. तो वो जो हाईएस्ट पीक वाले पैकेजेस छोड़ के जाते हैं उनको ज़्यादा चुभता है. जिनका एवरेज पैकेज होता है यूएस में उनको कम चुभता है. सो दैट्स वाई इट्स हार्ड टू से कि आपका 20% ही लॉस होगा या 30% ही लॉस होगा. सो दैट्स वाई इट इज़ काइंड ऑफ वेरिएबल. बट द लाइफ स्टाइल, द ओवरऑल सिक्योरिटी, फाइनेंसिस को एक साइड पे भूल के अगर आप वो सिमिलर लाइफ स्टाइल जो बात कर रहे हो यूएस कनाडा की, वो सिमिलर है, वो बेटर और सिमिलर ही फील होता है. एंड दैट्स व्हाई पीपल से इट्स बेटर टू गो टू कनाडा एज कम्पेयर टू गोइंग टू इंडिया फ्रॉम लाइफ स्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू. पर अगर आप बात करते हो अगैन इफ यू आर 40+, तो वो आपको महसूस ही नहीं होगा बिकॉज व्हेन यू रीच एट द एज ऑफ 40 or 40+, योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हैज ऑलरेडी रीच्ड. यू आर ऑलरेडी मे बी net worth of 500K plus or $1 million net worth, and you have that financial stability, and moving to Canada feels easier because you already have your net stock portfolio or your net worth ready to handle that change. और जब आपका stock portfolio एक बार ready हो जाता है वो US dollars में exponentially बढ़ता है क्योंकि आपका start ही वहीं से हुआ था. So you sort of have an edge when you have been in the US for a long time. So that's why जो लोग US में कुछ साल 5-10 years मूव करके कनाडा जाते हैं उनको इतना फर्क नहीं पड़ता. सो ऑल द पीपल हु कंप्लेन एट द एज हु आर लाइक यंगर, दे आर द मेजॉरिटी हु कंप्लेन. जो आप ऊपर जाते हो इन योर करियर 30-40, दैट अनस्टेबिलिटी हिट्स यू मोर एज कंपेयर टू द लेस मनी यू आर मेकिंग by having them move out of US. तो ये चीज़ें आपको कंसिडर करनी बहुत ज़रूरी है. सो डिफरेंट एज पे डिफरेंट हिट्स आपको पड़ते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट ऑनेस्टली अबाउट द जॉब मार्केट्स, तो लिंक्डइन पे वंस अगेन इफ यू कंपेयर द अपॉर्चुनिटीज, एंड्रॉयड हो, iOS हो, वेब डेवलपमेंट हो, डेटा साइंस हो, एवरीवेयर द नंबर्स इन टर्म्स ऑफ अवेलेबल जॉब्स आर 10x in or even more than 10x in US and एज कम्पेयर टू कैनेडा. तो वो हिट आपको करेगा, बट ये हिट आपको तब करेगा जब आप जॉब स्विच फ्रीक्वेंटली करना चाहते हो. जब आप एक स्टेबल कंपनी में हो, आप उसी कंपनी के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हो एंड यू नो दैट योर जॉब इज स्टेबल, यू विल नॉट इवन फील that at all. So the best way to have that move is actually through the company you're moving through. So अगर आपकी कंपनी यूएस में भी है, कनाडा में भी है, and you have the financial stability of being in the US for a long time, let's say your age is 30-35+, and you have been in the US, had that financial stability, तो आपके लिए move easy ही होता है. So that's why it all comes down to the stability in the minds of families, जिसके कारण ये पूरा move worth it बनता है. And every person has different needs. ये जो videos मैं बना रहा हूँ, it cannot actually be relevant to every single one. So families के लिए it's a different ball game. For someone who is a bachelor, it's a different ball game. So you have to figure out what you really want and then decide. So that is the whole point I want to make it clear through this video. And overall, जितना लोग complain करते हैं that H1B struggle is like crazy difficult, बहुत ज़्यादा painful है, एक young professional के लिए इतना difficult नहीं है, because that person can sort of somehow or the other through the route of consultants और कहीं ना कहीं से वो जॉब ले सकता है. बट when you are 40+, आपको इंटरव्यू रोल्स तभी ज़्यादा आते हैं when you have that level of expertise जो एवरेज से बहुत ऊपर है. तो that's why you have to think about long term planning जब आप उस एज के आसपास जा रहे हो. So be prepared to see what the future is coming for you. Either gain next level expertise or to be ready to handle this instability. So that sums up the video. I hope it was helpful and thank you so much for watching.